Hello students, welcome back to my channel BXT Point. So in previous part we have done till departmental undertakings, and from today we are going to start with statutory corporation. Statutory corporations are public enterprise brought into existence by special act of parliament. यानी कि जो statutory corporation है ये इनकम क्या कहता है पब्लिक एंटरप्राइजेस यानी कि गवर्नमेंट ऑन ठीक है brought into an existence by a special act of parliament and defined that its power and functions and rules and regulation governing its employ and internship with government departments. जिसके मैंने कहा public enterprise है the government owner ही government ही इसके rules and regulations ही government owned है. But this is a corporate body basically which created by the legislation with defined powers and functions and ठीक है अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है कि इट्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट यानी कि इसका खर्चा खुद ही है गवर्नमेंट में is with a clear control over a specific area or a particular type of commercial activity. ठीक है अब इसके फीचर्स की बात करें it is a well statutory corporation therefore have the power of the government and considerable amount of operating flexibility of private enterprises यानी कि इसके पास considerable amount of operating इसके बाद कुछ power है in operating flexibility of private enterprises. ठीक है फीचर्स की बात करें तो first feature is that it is set up under the act of an special act of an parliament that are governed by the provisions of that act. The act define the objects and power and privileges of the statutory corporation. First point, this is wholly owned by the state, completely owned by the government. यानी कि state has the financial, government has the ultimate financial responsibility and the power to appropriate the profit. So third point, the statutory corporation is a body corporate and sued enter into a contract equal property on its own name. यानी कि जो statutory corporation जिस नाम से चालू की गई है वो उसी नाम से किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होगी. He will be the sued और कोई तो प्रॉपर्टी ले रही है तो वो अपने नाम से लेगी गवर्नमेंट के नाम से वो नहीं ले सकती. Fourth point, this type of enterprise is usually independently financed and equal independent finance it obtain funds. ये कैसे funds को arrange करते हैं by borrowing from the government or from the PSUs, the public through the venues or या budgets of this को बेचकर ये ऐसे कमाती है. A statutory corporation is not a subject to same accounting and audit procedure applicable to government department same and it will be it is also not concerned with central budget of the government. यानी जो फरवरी में आपका बजट लॉन्च होता है उससे उसका भी लेना देना कोई नहीं है जो कि डिपार्टमेंट एंड अंडरटेकिंग का है क्योंकि उनका फाइनेंस जो है वो उसी में ही announce होता है कि इसमें कितना मिलेगा. The employees of these enterprise are not government or civil servants. ना तो वो government के employees होते हैं ना वो civil servants होते हैं ना they are not governed by the government rules and regulations of जो employees होते हैं वो government की rules and regulations से उनका कोई लेना देना नहीं है. लेकिन वो employees are rather governed under the special act in which the statutory corporations are set up. ठीक है merit से बात करें तो these form of organization enjoy some certain advantages. First, they enjoy independence in their functioning and a high degree of operational flexibility. They are free from undesirable government regulation and control. यानी कि government rule and regulation से free होते हैं कि funds इनका जो है that does not come from the central budget. The government does not interfere in the financial matter में भी interfere नहीं करती. Autonomous organization है तो ये अपने policy procedures within the power under which are assigned to them under the special act of parliament जिसमें set up हुई हैं उसमें वो कर सकती है. Statutory corporation is a valuable instrument for economic development में भी help करती. Limitations पे बात करते हैं in reality statutory corporation does not enjoy as much operation flexibility as stated above. यानी कि जितनी आपको मेरिट मतलब पढ़ाई ना थी तो ये पावर एंड कैपेसिटी मीन इसका गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करते लेकिन इतना भी नहीं है करती है कुछ मैटर्स में करती है. गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेयर
हमेशा इनके मेजर डिसीजंस में होता ही होता है, चाहे जो कितना भी पता चले, कितना भी कह ले कि हाँ आना चाहिए, लेकिन वो होता ही होता है। करप्शन एग्जिस्ट में, डीलिंग विद द पब्लिक, ये सब में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। गवर्नमेंट हैव अप्रोप्रिएट अपॉइंटिंग एडवाइजर टू कॉर्पोरेट बोर्ड, यानी कि वो एक कॉर्पोरेट एडवाइजर को अडॉप्ट करती है जो फ्रीडम ऑफ कॉर्पोरेशन विद एंट्रिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अथॉरिटीज को भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, उसमें गवर्नमेंट का कॉर्पोरेट बोर्ड भी आता है। गवर्नमेंट कंपनी, विच इज अ थर्ड टाइप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। Government company is established under the Companies Act 2013. 2013 being government company जो थी established हुई थी that are under and is registered and government under the provisions of these acts. These are established for purely business purpose and to spirit come. Okay. According to section 2 subsection 45. अच्छा कुछ लोगों ने पढ़ना नहीं आता, section 245 बोल देते हैं with both. ऐसा बोल Section 2 और जो ब्रैकेट में आ रहा subsection 45, section 2 subsection 45 of the Companies Act 2013, a government क्या गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या है? गवर्नमेंट कंपनी इज एनी कंपनी विच इज नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल, यानी इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जहाँ पे 51% ऑफ पेड अप कैपिटल जो दिया is not less than the central government or any state government or partially by central government or partially by one or more state governments. It includes subsidiary of a government company. इसमें subsidiary government company का involve होता है. Under the company that there is no change in the definition of the company. Company की definition यही नीचे हुई है. A government company may be formed as private limited company or a public limited company. There are certain provisions which are applicable to appointment, retirement of director. यानी कि कुछ provisions है यहाँ पे जो appointment और retirement directors में important है. ठीक है. अब इसकी फीचर्स की बात करें तो गवर्नमेंट कंपनी जो है have certain characteristics which make them distinct from other form of organization. अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ये अंडर कंपनीज एक्ट 2013 में फॉर्म हुई है. द कंपनी कैन फाइल अ सूट ऑन अ कोर्ट लॉ अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी. कोई भी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट ये कंप्लेन कर सकती है. लॉ ऑफ कोर्ट में कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट में भी और प्रॉपर्टी में भी एंटर हो सकते हैं. इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट. The employees of the company are appointed according to own rules and regulations as it contains memorandum and article of association of the company. The memorandum and article of association are the main documents. Government company के दो main document है जिसमें उनके objectives and rules और regulations involved होते हैं. बात करें next one की, तो इसमें the company are exempted from the accounting and audit rules and procedure. An auditor is appointed by the central and government, and annual report is to be presented in the parliament or a state legislature. A government company obtains its funds from the government shareholding and its private shareholders. ठीक है, यानी कि वो अपना फंड कहाँ से मिलता है? गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग्स और प्राइवेट शेयर होल्डर्स से उसको अपना फंड मिलता है. मेरिट की बात करें तो उसमें पहला मेरिट है that government company can be established by fulfilling requirement of the Indian companies identity. वो पैसे फॉर्मेशन इसका बहुत easy है. It is a separate act in the parliament. ठीक है. It has a separate legal entity apart from the government, यानी कि जैसे हमने पढ़ा था ना प्राइवेट कंपनी में the owner और उसका separate legal है कि ओनर की कुछ liability होगी, personal liability, वो कंपनी में से पैसे निकाला तो उसकी ड्राइंग से क्या लाएंगे? ठीक है, वो ही गवर्नमेंट कंपनी के साथ है. Yeah, तो अगला है it enjoys autonomy in all the manager decisions and take action according to business prudence, यानी कि autonomy. खुद ही decisions लेती है. These companies were providing goods and services at reasonable prices. ये companies हमारे को goods and services कम से कम reasonable prices में charge करती है और market को control करती है. Kind of unhealthy business practices, malpractices को रोकती है. Limitations की बात करें
since the government is our only shareholder, the government is the only shareholder, is what they say the provision of Companies Act does not much relevance, उसको relevance नहीं मिलता. It is constitutional responsibility, जिसकी constitutional responsibility है, that the companies financed by the government should have, it is not answerable directly to the parliament. Here, this is one of the major valor. ठीक है. Yeah, अच्छी limitation is to यार करना as it is. The government being the sole shareholder. क्योंकि sole shareholder कौन है? Government, the management and administration resist in the hand of the government. The main purpose of the government company, just like other companies, is to create that all for today. In next party, going to start with changing loan of public sector. Till then, take care. Bye bye. And stay healthy and stay safe. Do like how we share and subscribe us and hit the bell icon below.